Hi dear students and fellow listeners, very good evening to all of you. Today we are going to discuss entitled theme, Meaning of Educational Psychology. As we know that educational psychology is the branch of psychology in which we use the principles and techniques of psychology in the field of education. Dear students, question arises, why we use principles and techniques of psychology in the field of education? Dear students, when we will look through the prism of educational psychology, we cannot find the solution of problems pertaining in the field of education without having the knowledge of educational psychology. Dear students, when the teacher enters into the classroom, teacher enters into the classroom having the two identities. One, the teacher is the subject teacher. Second identity of the teacher is that he is psychologist or she is the psychologist. यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो मिशन है ये अधूरा है अगर एक टीचर के पास सब्जेक्ट नॉलेज होगी. फॉर एग्जाम्पल, टीचर जो है ही और शी इज गुड इन मैथमेटिक्स, बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री या लैंग्वेज सब्जेक्ट में से लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, लेकिन फिर भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज नॉट सक्सेसफुल अगर एक टीचर को साइकोलॉजी का नो हाउ नहीं होगा, क्योंकि साइकोलॉजी इज ओनली द डिस्कोर्स और डिसिप्लिन विच स्टडीज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. और जब तक कि एक टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं समझ सकता है तब तक we cannot achieve the aims and objectives of the teaching. As we know that within the juncture of classroom there is heterogeneity, यानी कि हर एक लर्नर जो है वो फितरत से मुख्तलिफ है, यानी कि every learner is different in terms of capacities and capabilities, in terms of tastes, desires, interests, attitude and aptitude. And true education is that when we will provide the education as per the need, as per the requirement, as per the capacities and capabilities of the learner. Dear students, इसीलिए एक टीचर के पास एजुकेशनल साइकोलॉजी का नो हाउ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम एजुकेशन की सॉल्व नहीं हो सकती है विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. देयर आर इन्यूमरस प्रॉब्लम्स which are faced by both learner and the teacher, like what to teach, whom to teach, how to teach, where to teach, why to teach, and by and large when to teach. Dear students, these are the innumerous problems which are faced by or which are encountered within the classroom. For example, what to teach. What to teach means कि एक टीचर को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ाना है. The true teaching is not possible if the teacher does not possess the knowledge, what the knowledge he is or she is going to teach to the students. और गुड टीचर वो नहीं है कि जो बिना लेसन प्लान के क्लासरूम में जाएगा. कभी भी क्लासरूम में अगर जाना होगा
चाहे वो क्लासरूम लोअर लेवल का होगा या हायर लेवल का होगा। टीचर शुड ऑलवेज कीप इट इन द माइंड कि प्रिपरेशन ऑफ द कंटेंट, कि मुझे क्या कंटेंट बच्चों को पढ़ाना है। और वी कैन नॉट ट्रूली अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और द कंसर्न्ड डिस्कोर्स without the preparation. Preparation is necessary. It is the educational psychology which makes teacher community that in advance you have to be alert and you have to prepare your lesson plan. Home to teach. Home to teach dear students means कि इशारा यहाँ पर लर्नर की तरफ है कि किसे पढ़ाना है। डियर स्टूडेंट्स, टीचर के लिए मैंडेटरी है कि लर्नर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड वी कैन नॉट रियली अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इफ द टीचर डज नॉट नो दैट होम आई हैव टू टीच। यानी कि लर्नर के रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। Knowledge about the learner's desires, learner's interests, learner's capacities, learner's capabilities, learner's attitude, learner's aptitude. Until or unless the teacher will not understand the complete know-how about the persona of the learner, the teaching learning process is not possible. That is why educational psychology focuses on whom to teach. मुझे किस लर्नर को पढ़ाना है, यानी कि लर्नर को फितरत से समझना है। नंबर थर्ड, how to teach. As what to teach is important, whom to teach is important. Dear students, same preference and priorities given to the हाउ टू टीच। टीचर के पास एक परफेक्ट मेथडोलॉजी होनी चाहिए। आई मीन टू से यू आर्ट ऑफ टीचिंग, कि टीचर हैज़ टू ऑलवेज कम टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। किस मेथडोलॉजी से बच्चे को समझ में आता है, बिकॉज अनटिल और अनलेस वी विल नॉट कम टू द लेवल ऑफ द लर्नर, द ट्रू टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। We cannot achieve the goals of the education, I mean to say you teaching process. That is why more focus is given how to teach. So keeping in view how to teach, the teacher has to use various methods in order to make the teaching learning process not only interesting but also goal oriented and purposeful. Like lecture method has given importance, learning by doing method has given importance, playway method, lab method, discussion method, dramatization, experimental method, and so on and so forth. These are the series of methods which the teacher has to use in order to make teaching learning process effective and goal oriented. Where to teach? Dear students, where to teach simply means the conducive atmosphere in terms of physical aspect and in terms of social aspect. यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जब तक कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं होगा। When you will look through the prism of John Dewey's concept of education, John Dewey defined education is the tripolar process, means teacher, taught, and social environment. These are the three basic indicators or components which promotes the education. Dear students, where to teach means जहाँ पर हम बच्चे को पढ़ाते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट में भी साउंड होना चाहिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वेल इक्विप्ड, यानी कि लेबोरेटरी होनी चाहिए,
लैब फैसिलिटी वहाँ पर IMTCU होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्लासरूम्स होने चाहिए, या प्रोविजन फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होने चाहिए। और स्कूल जो है या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे होनी चाहिए, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। और इन टर्म्स ऑफ सोशल एस्पेक्ट द इन्वायरमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, चाहे ये IMTCU अगर सोशल इन्वायरमेंट सपोर्टिव नहीं होगा या इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो दोनों सूरतों में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई एजुकेशनल साइकोलॉजी also IMTCU intensively focuses on where to teach. Why to teach? Dear students, why to teach simply means टीचर को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। Why I am teaching to the students? It means that teacher must be ambitious. Teacher must be conscious about the goals, about the aims and objectives. And what is the ultimate and the final aim and objective of teaching? That is the perfection in the learner. To develop skill competency, to disseminate the appropriate knowledge to the learner. Dear students, according to Skinner, educational psychology is the branch of psychology which deals with teaching and learning. As we know that teaching simply means interaction between teacher and the taught, where the teacher tries to disseminate the knowledge to the student in order to bring the perfection, in order to make the teaching learning process effective and productive. और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं बन सकती है, गोल ओरिएंटेड नहीं बन सकती है, और हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते हैं अगर एक टीचर के पास एजुकेशनल साइकोलॉजी का नो हाउ नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, educational psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age. Learning है, it is never-ending process. Throughout the life, we learn different things in different stages. बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम लर्न करते रहते हैं, यानी कि हर एक मोड पे हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और वी रिसीव द एक्सपीरियंसेस विद द रिजल्ट ऑफ गाइडेंस, एंड गाइडेंस इज गिवन थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस in order to bring the perfection. According to Peel, educational psychology is the science of education. ये definition बहुत बार सेट में भी पूछी गई है और नेट में भी पूछी गई है. It is the educational psychology which is scientific in nature. क्योंकि educational psychology का जो nature है, it is purely scientific. Because it helps to study the behavior of both teacher and taught. When we'll take into cognizance the learner's behavior, the educational psychology helps to the teacher to understand the total makeup of the learner. I mean to say you learner के desires understand करना, उसके needs and requirements को समझना, उसके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को समझना, लर्नर्स के कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को समझना. Until or unless we will not understand the total persona, I mean to say you nature of the learner, teaching learning process is not possible. Dear students, this was all about the today's lecture. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.